हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेलों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने जो है सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है पढ़ा था। तो राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ combination of cells, parallel combinations of cell. So how can you define this combination? So an arrangement of an arrangement of two or more than two cells, in which terminal potential difference across each cell to be same is called parallel combination of cells. Parallel combination of cell. An arrangement of two or more than two cells in which terminal potential difference across each cell to be same is called parallel combination. In previous combination, what was same? Current is same, but in this situation, terminal potential difference same. So, in this combination, you have to find out equivalent EMF of combination, equivalent internal resistance of combination, and what is flowing current through this combination. So there are three parameters for which we derive expression. So you can note this definition. Now we draw circuit diagram for this combination. Suppose this is first cell of EMF E1 and internal resistance is R1. This is second cell of EMF E2 and internal resistance is R2. Both are connected in parallel with an external resistance. This is equal to R. Clear? Now the cell E1 passes current I1. For this cell current passes is I2, but collectively this current becomes I. This is I. Here we can write I1, this is I2. This point is A and this point is B. But potential difference between these points is same. Why? If we connect voltmeter between these terminals, then the reading of voltmeter will be common for both cells. But what is equivalent circuit? So we consider there is a cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent, but this cell is also connected with
external resistance R, and flowing current through the circuit is same as in this circuit. So this point is say this is B, but we consider the potential difference between point A and B is same as for this circuit. So terminal potential difference for this circuit and for this circuit remains same. Now we can write in figure. In figure there are two cells of EMF E1 and E2 having internal resistances R1 and R2 respectively. R1, R2 respectively. Clear? And respectively. Total current respectively. These cells, then figure there are two cells EMF E1 and E2 having internal resistance is R1 and R2 respectively. These cells are connected with an external resistance capital R, and flowing current is I. Now we can write total flowing current. You can write I equal I1 plus I2. This is equation first. I1, current flows in cell first. Current flows through cell E1. I2, current flows through cell E2. So what is I1 and I2? I1 and I2, current flowing for cell E1 and second for E2. But terminal potential difference between A and B. Okay, terminal potential difference between A and B for cell E1. So what is the result? Result is V equal E1 minus I1 R1, or I1 R1 equal E1 minus V, and current I1 equal E1 minus V upon R1. This is second equation. You have to find out total current I, E equivalent I, and R equivalent. These parameters we have to find out. So we start here. Total current I is sum of these currents I1 and I2. Now what is I1? You can find out I1 by using this equation. In similar way, you can find out I2 for cell E2. You can note this
Then terminal potential difference between A and B. Terminal potential difference between A and B for cell E2. So what is the result? Terminal potential difference is same for both cells. V equal E2 minus I2R2, and I2R2 equal E2 minus V, and I2 equal E2 minus V upon R2. This is the third equation. Clear? But value of I1 and I2 you can put in equation first, which is I equal I1 plus I2. So by using equation first, second and third, I am removing this. You cannot it. So by using equation first, second and third, what is the result? Result is I equal I1 E1 minus V upon R1, I2 E2 minus V upon R2. I equal E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2. You can separate LCM. So we can write R1 for both E1 and V. In similar way, you can write R2 for E2 and R2 for V. So we can split LCM in this step. Now we can write as I equal E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V is common, 1 upon R1 plus 1 upon R2. Now taking LCM, I equal LCM is R1 and R2, so E1 R2 plus E2 R1, here minus V R1 plus R2 upon LCM is R1 plus R2. But we have to find out in this step value of V, terminal पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, now V into R1 plus R2 upon R1 R2 equal E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 R1 R2 R1 R2 minus I उधर आ जाएगा, माइनस V वाली स्टेप इधर आ जाएगी. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई multiplying both sides by R1 R2 upon R1 plus R2. So result is V into R1 plus R2 upon R1 R2 multiply R1 R2 upon R1 plus R2. E1 R2 upon plus E2 R1 upon R1 R2 multiply by R1 R2 upon R1 plus R2 minus I into R1 R2 upon R1 plus R2. So each step will be multiplied by R1 R2 upon R1 plus R2.
but here this is cancel out, this is cancel out, so remaining term is V. Now R1 R2 is cancel out, so result is E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. Now minus I R1 R2 upon R1 plus R2. This is equation 4. This is equation 4. So you can write terminal potential difference between A and B in terms of E1 R1, E2 R2 and I. Now you can note up to equation 4. Now if we consider equivalent EMF EEQ and equivalent internal resistance REQ, then for this cell, how can you write potential difference between A and B? If there is equivalent EMF and equivalent internal resistance, if there is equivalent EMF and equivalent internal resistance, E1 E equivalent and R equivalent respectively, then terminal potential difference between terminal A एंड B, यदि हम ये कंसीडर कर लें तो फिर इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल EEQ माइनस I और REQ. दिस इज इक्वेशन 5th. तो सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल EEQ माइनस I REQ. क्लियर? नाउ यू कैन कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5. कंपेयर करने पर क्या आएगा? V, here V, this is equivalent EMF, this is also equivalent EMF, this is R equivalent, corresponding to which this term is R1 R2 upon R1 plus R2. तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा. तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, on comparing both sides, on comparing both sides, EEQ equal comparing both sides of equation 4 and 5. So result is EEQ belongs to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So EEQ equal E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. So what is the equivalent of REQ? This is equation 6.
So Req equal R1 R2 upon R1 plus R2. This is equation 7. So by comparison of these two equations 4 and 5, we can find out value of EEQ and REQ. यही हमें फाइंड आउट करना था, EEQ और REQ. But what is flowing current in this circuit? So how can you find out flowing current? So we find out flowing current. तो हम यहाँ इक्वेशन 7 तक पहुंच चुके हैं. नाउ flowing current I equal, now flowing current I equal, so what is, by using Ohm's law, equivalent EMF E equivalent upon total resistance of circuit R equal R equivalent. This is equation 8, but you can put value of 6 and 7 in equation 8. So by using equation 6, 7 and 8, by using equation 6, 7 and 8, then what is the result? I equal value of E equivalent E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 divide by capital R plus value of R equivalent R1 R2 upon R1 plus R2. This is equation 9. But we take here LCM R1 plus R2 and neglect this LCM with this LCM, then what will be result? So I equal, you can write E1 R2 plus E2 R1, LCM इससे cancel, but here term will be R into R1 plus R2 और plus ये रह जाएगा R1 R2. This is equation 10. तो आपके पास में एक तो ये इक्विवेलेंट आ गया, एक ये आर इक्विवेलेंट आ गया, और एक जो है ये आपके पास फ्लोइंग करंट आई आ गई. तो आपको नॉन क्या था? नॉन था E1, E2, R1, R2, कैपिटल R. ये पैरामीटर्स हमारे को मालूम थे, ठीक है, और हमने ये जो है वो फाइंड आउट करना था. तो अब हम यहाँ इक्वेशन जो 9 है उस पर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, देखते हैं उसमें क्या हमें मिलता है. बाकी ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. तो फिर देखते हैं नेक्स्ट. तो अब यहां से मान लीजिए कि आपके पास में ये तो दो सेल थे. ये इक्वेशन थी 9 वाली, I इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. दिस इज इक्वेशन 9. तो फिर अब हम यहाँ कंडीशन ले रहे हैं. एक बार आपको लिखना नहीं है, यहाँ मैं दो सेल आइडेंटिकल हों उनके लिए अज्यूमशन करवा रहा हूं. कितने सेल हों? दो सेल. यदि दो सेल आइडेंटिकल हों, एक समान हो, ये दोनों ही एक ही ईएमएफ के E1 के, E1 इक्वल E2 इक्वल E हो जाए, R1 इक्वल R2 इक्वल R हो जाए. इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी I? सो यू कैन राइट I इक्वल कितना? ER प्लस ER अपॉन में R प्लस R अपॉन में R प्लस R इंटू R अपॉन में R प्लस R. So this is 2ER. So you can write I equal 2ER
अपॉन में 2r और अपॉन में r प्लस r स्क्वायर अपॉन में 2r। इस स्टेप से ये आएगी, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, इट मीन्स e। ऊपर ये जो टर्म थी वो e रहेगी, कितने सेल आइडेंटिकल लेने से? 2 सेल आइडेंटिकल लेने से। और नीचे ये हमारे पास में r से r कैंसिल आउट हो गया, तो फिर ये r/2 रहेगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो r/2 रहेगी। कब? इफ वी टेक 2 आइडेंटिकल सेल्स, सेम EMF एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज टर्म? ये टर्म क्या बन जाएगी? दिस टर्म विल बी इक्विवेलेंट टू E और दिस टर्म विल बी इक्विवेलेंट टू r/2। यू कैन लुक हियर, दिस इज इक्वल टू E upon r plus r/2. But suppose we take n identical cells, so this value will be same as E for n cell. तो फिर मैं यहाँ लिखूं 4n cell, 4n cells. What is value of E? This will be E. But r plus for 2 cell, this is r/2. तो 4n cells, this will be r/n. क्लियर? तो बस यही चीज मैं 2 सेल लेकर के और n सेल के लिए जनरलाइज कर रहा हूं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो फिर अब हम यहां लिख सकते हैं, वो कैसे? लिखिए, इफ there are n identical cells there are n identical cells connected in parallel, then E1 equal E2, E dash dash, En equal E, R1 equal R2 equal Rn, this is equal to R. तो by using equation 9, ठीक, by using equation 9, by using equation 9 we get, क्या मिलता है? we get I equal E upon R plus R/n. This is equation 11. ये हमारे पास में 11 हो गई। बट यू कैन राइट एज, तो ये मैं रिमूव कर सकता हूं यहां से। I इक्वल NE अपॉन NR प्लस R, N एलसीएम NR प्लस R और N किससे मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाकर के? E से। तो NE अपॉन में हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 12। अब इफ here NR is very greater than in comparison of R, then small r can be neglected. Then by using equation 12 result will be I NE upon NR। क्यों? R को नेगलेक्ट कर दिया, N से N क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो I इक्वल E अपॉन R। दिस इज इक्वेशन 13। मीन्स इफ NR is greater than small r, in this situation if we increase number of cells then there will be no effect on current. Why? देखिए इक्वेशन 13 में n जो है वो नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर चाहे आप n सेल लगाइए और चाहे आप सिंगल सेल लगाइए, करंट की वैल्यू आपके पास में सेम ही रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल है वो कंप्लीट हो जाता है और
नेक्स्ट जो है आर्टिकल हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।